Hello everyone. Welcome to Commodities Podcast. This is Rakesh Khanna from Mirae Asset Sharekhan. Today we have an update on crude oil. Crude oil price is in strong downtrend characterized by lower high lower lows within a falling channel, effectively illustrate bearish sentiment in the market. The breach of a crucial support level like Rs 6,000 for crude oil can indeed signify a strong bearish trend. However, the immediate support is identified at Rs 5,988 level. A break below Rs 5,988 level could trigger further declines with the next target at Rs 5,845 and Rs 5,700 level in near term. The important resistance is identified at Rs 6,220 level. The MACD indicator is below the center line, reinforcing the bearish momentum expectation in upcoming trading sessions. Thank you. नमस्ते, मैं राकेश खन्ना मिराए एसेट शेरखान की तरफ से आप सबका कमोडिटी पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। आज जिस कमोडिटी की जानकारी देने जा रहा हूँ वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल प्राइस फॉलिंग चैनल में लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन के साथ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। क्रूड ऑयल प्राइस ने Rs 6,000 लेवल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है, जिससे ये पता लगता है कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। नीचे में इमीडिएट सपोर्ट Rs 5,988 लेवल पर है। अगर ब्रेक करता है तो Rs 5,845 और Rs 5,700 लेवल का टारगेट देखा जा सकता है। ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस Rs 6,220 लेवल पर है। MACD इंडिकेटर सेंटर लाइन के नीचे मूव कर रहा है, जिससे ये पता लगता है कि स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.